physics. We'll start in a few minutes. ये बुक आप सब लोगों ने ले लिया? ये सबके पास है? गुड. हमारे पास नहीं है तो वो क्या है? हाँ, मतलब ये कौन सा बुक लिखी? एमटी बोलना फिंगर टिप्स मतलब मैं सोचा फिंगर टिप्स क्या है. नहीं है ना बरोबर. ये जिनके पास बुक्स हैं सीईटी के, just take the physics one, go to page 649. 649 फिजिक्स. ये किसका है? तुम दोनों ने एक ही लिया है? अच्छा ऐसा बोल. स्टार्ट रीडिंग. फिर मैं देखता हूँ तुम कोई ये इतना वजनदार बुक क्यों बनाते? पहलवान बुक ऐसे बॉडी बिल्डिंग करना पड़ेगा. ये कैसे कम्युनिकेट कैसे करूं?
ऑनलाइन जो है बैठे, ये सीईटी वाले हैं, नीट वाले हैं? नीट पक्का है? तो उनके पास ये बुक्स होंगे नहीं होंगे? तो बुक ही समझ में नहीं आ रहा मुझे। एक मिनट दिखाना। हाँ, हाँ। लो, चलो, टुडे आई एम स्टार्टिंग अ वेरी सिंपल टॉपिक, मैग्नेटिक मटेरियल्स। देखिए हेडिंग, मैग्नेटिक मटेरियल्स। अच्छा, इस जो संडे का है एग्जामिनेशन पैटर्न अभी सर के साथ क्लियर हो गया है, तो देयर इज नो, इस बार नहीं रख रहे हैं हम जो प्रीवियस वाला मिसिंग, नेक्स्ट टाइम से आएगा। मतलब फिजिक्स में तुम्हारा सेमीकंडक्टर्स हो चुका था, वो इस बार संडे को नहीं। हाँ, उस टेस्ट के बाद, हाँ संडे को टेस्ट हुआ था, संडे के टेस्ट के बाद मतलब इट विल हैव रेडियो एक्टिविटी अपना पहला हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, एटम न्यूक्लियर, फिर मैटर वेव्स, और लास्ट में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्चुअल में 2 ही लेसन है, पर उसको टॉपिक्स करके हमने 4 बना दिए। तो ये हफ्ते में जो भी हुआ है, ओके, और इनफैक्ट कल तक जो होगा लाइक दैट, तो वो इंक्लूड होगा। बट टुडे सपोज आई एम स्टार्टिंग विद मैग्नेटिक मटेरियल्स, तो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं आएगा, दैट आई विल पुट इट डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम। तो ये 4 टॉपिक्स हैं। हाँ, अरे बात समझ में? ओके, फॉर मैथमेटिक्स इट विल बी व्हाट, लॉजिक, स्ट्रेट लाइन, और लॉजिक ही कंटिन्यू किया ना हमने। हम्म? कल मैट्रिसेस, बट नहीं मैट्रिसेस नहीं इंक्लूड करूंगा, मैट्रिसेस तो स्टार्ट होगा ना 1 घंटे में, क्या होगा? अरे बात समझ में? अच्छा, एंड फ्रॉम टुमारो, और वर्स्ट केस फ्रॉम मंडे। अब मुझे वो पूछना पड़ेगा भाई, मंडे छुट्टी है क्या, नहीं पता नहीं। हम्म, हाँ। क्योंकि मैं जहाँ से आता हूँ वहां से मुझे आने नहीं देंगे सही सलामत, मैं मर जाऊंगा। होली के दिन निकला ना बाहर, घर के बाहर, तो खलास। सो आई डोंट नो मंडे
चलो whatever the next working day, कल या तो फिर मंडे या तो ट्यूसडे, ओके आवर टाइमिंग्स आर चेंजिंग बिकॉज अभी सर को कैसे है कि बिफोर 10th of April I have to finish maths and physics at least for CET. Physics for NEET will of course go on for the entire month of April. पर तुम लोगों के लिए मुझे 10 तारीख तक खत्म करना है। 10 तारीख तक फिर हमको बहुत फास्ट करना पड़ेगा। सो नाउ टुमारो ऑनवर्ड्स या जैसे कहा वर्स्ट केस ट्यूसडे ऑनवर्ड्स मैथ्स एंड फिजिक्स विल आल्सो बी फॉर 1.5 आवर्स। तो अभी अपना शेड्यूल पूरा चेंज हो रहा है, चाहिए तो लिख के लो, चाहिए तो ध्यान से सुनो, लिख के लो। इनिशियल दोनों तो जैसे वैसे ही रहेगा, 9 to 12 मतलब 9 to 10:30, 10:30 to 12 will be your biology and chemistry. अरे बात समझ में, biology and chemistry. 12 onwards till 12:45, 45 minutes lunch break. 12 to 12:45 will be a lunch break. तो तुम लोग जो जाते हो जल्दी से 45 मिनट्स में वापस आना है, घर जाके 45 मिनट्स में वापस आ जाओ फटक से। फिर 12:45 को होगा फिजिक्स टिल 2:15, 1.5 आवर्स। तो 12:45 से लेके 2:15 तक होगा फिजिक्स और 2:15 से लेके 3:45 तक होगा मैथ्स। यानी तुम्हारे लेक्चर्स ही चलेंगे 3:45 तक। अरे ये कुछ बात समझना, क्या क्या? हाँ हाँ, 9 से 4 वैसे समझ के चलो, 9 से 4 वैसे चलेगा, और वो भी सिर्फ लेक्चर्स। उसके बाद तुम चाहते हो तो 1-2 घंटा बैठ के इधर पढ़ाई करो, अगर तुम्हारा फ्यूज नहीं उड़ गया है तो। तुम लोग तो बैठते ही हो, अरे बैठो ना यार, जरूर बैठो तुम। नहीं, बहुत हो गया वो 4, अरे बस चलो। सो दिस इज द शेड्यूल फ्रॉम टुमारो और मंडे। मैं सर से बात करता हूँ जैसे वो होगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि एज इट इज सिंस यू आर गोना कम ऑन संडे, टेस्ट के लिए तो आ ही रहे हो ना भाई, तो उस दिन भी हम लेक्चर तो रखते हैं ना। एटलीस्ट वी कैन हैव 1 or 2 लेक्चर, एटलीस्ट वी कैन हैव फिजिक्स, भले मैथ्स मत रखो चलेगा। तो मैथ्स का मुझे आराम से हो जाएगा एकदम, मुझे कॉन्फिडेंस है आराम से मैथ्स हो जाएगा। मैथ्स का टेंशन नहीं, टेंशन इसका है, दिस इज टू वास्ट। आ रही है बात समझ में? ओके, सो आज हम स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स। इसमें फ्यू फॉर्मूले एंड फ्यू सम्स, मोस्ट ऑफ इट इज थियरी। ये मतलब एक ऐसा बहुत एक रेयर लेसन है जहाँ पर तुमको थियरी मिलने वाला है। लिखो, राइट द हेडिंग, हेडिंग दैट्स द नेम ऑफ द टॉपिक, मैग्नेटिक मटेरियल्स। व्हेन एंड फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट पॉइंट वाइज लिखते चलो। व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल, I hope you know all these terms. As it says, di means two pole, polarity has been reduced, plus minus. When an electric dipole is kept in the electric field, the energy stored is electrostatic potential energy.
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, उसके फॉर्मूला लिखते हैं। Potential energy is denoted as U for that magnet. This is integration. सब पता है ना भाई? We are not performing any calculation here, but this is integration from these are definite intervals 0 to theta tau. पता है ना ये सिंबल? टॉर्क टो, इसको क्या पढ़ते हो तुम? टो. So this is sorry. मट्टी कहाँ से आएगी? पूरा मट्टी कहाँ से? लिखो नेक्स्ट पॉइंट्स. When theta is 0 degrees, इसकी बात कर रहे हैं, इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं. When theta is 0 degrees, cos theta is cos 0 is 1 is equal to 1. Therefore, ये देखो ना, ये 1 हो गया. Okay, so UM is what? Minus MB. देखो UM is what? Minus MB. This is the position. Continue करना उसके बाद. This is the position when M and B are parallel and bar magnet possesses minimum potential energy. अब जैसे मैंने पहले ही कहा है कि यू प्लीज ट्रीट दिस एज वन स्टेटमेंट, और ऑब्वियसली तुम उसको पूरे स्टेटमेंट को याद करोगे. अब उसमें से ब्लैंक जो है कहीं पर भी आ सकता है. फॉर थीटा इक्वल टू 0 M and B are dash parallel, potential energy is dash minimum, or for theta equal to 0 UM, okay, like theta equal to 0 the potential energy can be minimum आ सकता है वैसे. ठीक है. नेक्स्ट, theta equal to 180. Second, next step, theta is 180. अरे 0 की इधर 1 आ रहा था. -1. Cos 180 is -1. तो ये देखो ना, ये पहले से ही माइनस है, ये 1 है, -1. तो UM becomes what? MB. UM becomes MB.
bar magnet possesses maximum potential energy. Maximum potential energy. थर्ड केस जो है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, जरा ध्यान से सुनना. थीटा इक्वल टू 90 degrees. Theta is equal to 90 degrees. So obviously cos 90 is 0. Therefore um, that is the potential energy is also 0. This happens, this म्हणजे um equal to 0 happens when the bar magnet is aligned perpendicular to the direction of magnetic field. Perpendicular to the direction of magnetic field. Next statement लिखना. The time period, this can be treated as a formula. Of course, it's a formula. Sums में आएगा. Time period of angular oscillation. Time period of angular oscillation of the bar magnet in a uniform magnetic field is 2 pi upon omega. 2 pi upon omega, where omega is equal to so time period is what? क्या आएगा ये? उल्टा हो जाएगा. ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है. Okay. लिखो.
for an electron revolving in a circular orbit the angular momentum capital L लिखा. नेक्स्ट पॉइंट, बोर मैग्नेटॉन, ये 2 बार आया है. इसमें यू कैन हैव अ क्वेश्चन आइदर वे. जैसे यहाँ पर they won't ask you the value, वो वैल्यू कभी नहीं पूछेंगे, but they can definitely ask you the formula for magneton and they can ask you the units. वो याद रखना, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. नींद भी आ रही, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, पढ़ो 2 मिनट, मुझे भी आ रही है. अच्छा, स्पेशली जो सीईटी वाले हैं, तुम चारों सीईटी वाले, और भी थे ना सीईटी वाले. अच्छा हाँ, वो तो तुम 6 लोग हो. ओके, रेस्ट ऑल ऑफ योर नीड. तो पहले टेक्स्ट बुक जो है उसमें लेसन के पीछे जितने एमसीक्यूज रहते हैं पहला वो करो, उसमें से भी मैक्सिमम चांस होता है एग्जाम में आने का. नेक्स्ट लिखना पॉइंट, द मैग्नेटिक मूवमेंट. ये आया है, ये क्वेश्चन आया है. मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन एटम is stated 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 written as stated in terms of Bohr's magneton, in terms of Bohr's magneton P dot M capital. इसके बाद लिखना the ratio of, ये ऐसा होगा, ME, ये
E upon 2me is called gyromagnetic ratio, GYRO, gyromagnetic ratio. अब ये तुम खुद करके देखना. Just giving you the values. E, ये वाला, this E, small e is equal to 1.620 minus 19, sorry, 10 raised to minus 19 कूलम C. और ये जो है Me, mass of the electron, 9.1 10 raised to minus 31 kg. 10 raised to minus 31 kg. करो calculate. Therefore, gyromagnetic ratio of electron is अरे तुम डिवाइड करके देखो खुद. E और Me का वैल्यू दिया ना भाई अभी. कितना आ रहा है? See what happens with your entrance examination papers जो रहते हैं, खास करके अभी सपोज तुम नीट की बात कर रहे हो, तो इट इज लाइक पेपर एग्जाम ऑन पेपर. तुम्हारा तो भाई ऑनलाइन रहता है कंप्यूटर, नॉट ऑनलाइन एग्जैक्टली बट ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम. सो व्हेन यू और रादर व्हेन द क्वेश्चन पेपर स्टार्ट्स, वहां पर ये सब वैल्यूज पहले ही पूरा लॉट में दिया रहता है. मतलब तुमको क्वेश्चन के साथ वैल्यूज नहीं मिलेगा. मतलब ई एमई ये क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होने से पहले ऑल द रिक्वायर्ड वैल्यूज, एच कलम ने देखा था, प्लैंक्स कांस्टेंट एंड ऑल दैट, सब कुछ पहले ही लिखा रहता है. तुम्हें ये पता होना चाहिए कि व्हाट्स द फॉर्मूला एंड व्हिच वैल्यूज टू यूज. अब कल कोई तुमको सीधा ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि द गायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज डैश, तो बैट थोड़ी करना है. ओके, हाँ फॉर्मूला ये पता है, खुद कैलकुलेट करके देखना है. 0. हाँ 10 to power 12. एक्चुअली तुम लिख सकते हो 8.79, तुमको ज्यादा 8.8 into 10 raised to 10 11. अच्छा मेन है इसका यूनिट्स, मेन है इसका क्या आएगा? है 10 है 10 raised to 10 है 8.8 into 10 raised to 10. अभी देखो ना भाई इसका यूनिट क्या था? अरे लिख दिया ना वैल्यू यार, कूलम. इसका वैल्यू क्या था? खत्म. कूलम पर केजी या सी केजी -1. These can be the possibilities in very simple terms, like the units of gyromagnetic ratio is dash. अरे बात समझ में? तूने किया कैलकुलेशन? 8.8 लिख दिया, चलो हो गया. Next point. Now we are coming to these important things. The ratio of magnetic movement, the ratio of magnetic movement
to the volume of the material, volume of the material is called magnetization. Magnetization. It has the dimensions. it मतलब magnetization, capital M. Magnetization का symbol है capital M. Magnetization has the dimensions L1, L minus 1A and SI units of ampere per meter. उसका यूनिट्स क्या है? एम्पियर पर मीटर. उसका डायमेंशन क्या है? L raised to minus 1 into A. Magnetic field, next point, magnetic field inside a solenoid. Solenoid पता है ना? SOLENOID, solenoid is given by B naught mu naught Ni. Next point, the net magnetic field inside the rod placed in a solenoid is capital B. This is obviously B naught plus Bm. ठीक है. B naught क्या था? अभी हमने देखा. B naught is the magnetic field of the solenoid. इसके आगे कंटिन्यू करो. Where Bm is the magnetic field. Bm, अरे इधर लिखा है ना भाई Bm. Bm is the magnetic field due to the material. तो समझने की कोशिश करो. This is the magnetic field due to the solenoid. This is the magnetic field due to the material kept in the solenoid. तो टोटल नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा B naught plus Bm. B can be also experienced capital B. ये जो है capital B can also be expressed B is equal to
mu naught H B is equal to mu naught H plus mu naught M, capital H capital M. M क्या था अभी पढ़ा था, मैग्नेटाइजेशन। M मतलब मटेरियल कैसे होगा, बिजली। हाँ तो बता रहा हूँ ना। Capital H is the magnetic field intensity. Magnetic field intensity. And H is equal to Ni. H. Number of turns into the current, Ni. लिखो कैपिटल H capital H देगा ना अभी, magnetic field intensity is not too strong, and the magnetization capital M induced in the material is proportional to the magnetic intensity. अभी यहाँ पर एक नया सिंबल आता है, ये सिंबल लिखते कैसे हैं देखो, इट्स लाइक अपीयर्स लाइक एन एक्स, ससेप्टिबिलिटी जिसको बोलते हैं। यू ड्रॉ वन लाइन लाइक दिस, ये स्ट्रेट होना चाहिए, और एक्स का जो दूसरा लाइन है इट इज समवट लाइक दिस, ठीक है। सो हियर m is susceptibly constant into h. तो इतना ब्रॉड मत करना, इसको थोड़ा हल्का कर देना ऐसा, दिस गैप शुड बी लेस। This symbol is called as, ये जो हाँ सिंबल है, दिस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, SUSCEPTIBILITY, susceptibility. it म्हणजे susceptibility is the measure of the magnetic behavior of the material in external applied magnetic field,
एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। क्या करे, कौन थक गया? प्लीज पढ़ के देखो, बहुत कुछ जो है अच्छी तरह पॉइंट्स पढ़ो बाबा, ये प्लीज। Now we will see those three magnetic materials. Okay. Diamagnetic, paramagnetic and ferromagnetic. सीधा पहला एक पॉइंट लिखना, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट जो भी है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फॉर diamagnetic material, DIA, diamagnetic material is negative. Diamagnetic material is negative for paramagnetic material. Positive and small. For ferromagnetic material, positive and large. Negative dia है, para is positive but small, और ferro is positive but large. When diamagnetic materials are kept in a magnetic field, they move from the stronger part to the weaker part of the magnetic field. Next point लिखना important है. These magnetic materials instead of attracting magnetic materials, they are repelled, REPELLED, they are repelled by the magnet.
they are repelled by the magnet. अरे ये बात समझ में? Okay, yeah, very simple, इसमें हो जाएगी. Next, diamagnetic property क्या हो गया? Diamagnetic property is is present in all the materials. In all the materials. So मतलब कोई अगर तुमको गलती से पूछता है कि which is that तीनों में से which is that property, dia, para, ferro. It's dia which is present in all the materials. Okay. I'll do one thing. We'll stop today. कल इसको कंटिन्यू करते हैं. अब मैं सिर्फ तुम लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि डू यू वांट मी टू इंक्लूड दिस लेसन फॉर संडेज टेस्ट? थ्योरेटिकल है मतलब. हाँ भाई ये फिजिक्स है ना, चलेगा? ठीक है. So this Sunday you can expect like 2 questions on radioactivity. Okay, around 3 questions on this, 4 questions on atom nuclei, and remaining 4 questions on अपना उसने जो किया था photoelectric and all that matter waves. उसमें 1-2 क्वेश्चन और डालता हूँ और इसमें से एक 3 या 4 क्वेश्चन देता हूँ. So we have the pattern will be same, 15, 15, 15 PCM, bio 30. तो I'll prepare it accordingly. तो अभी वापस बता देता हूँ. इस बार मंडे से जो हमने स्टार्ट किया था रेडियो एक्टिविटी, उसके अप्रोक्सीमेटली 2 क्वेश्चन रहेंगे. एटम एंड न्यूक्लियर उसके 4 रहेंगे. अब मैं 5 डालता हूँ इसके मैटर वेव्स एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और 4 क्वेश्चन इसके. ऑफ कोर्स कल भी लूंगा, यानी कल ये लेसन कंप्लीट होगा और पूरे लेसन पे 4 रहेंगे. ऐसा नहीं कि जो आज लिया है कल तक जो चलेगा वो पूरा सिलेबस रहेगा. फाइन. सो वी विल कंटिन्यू टुमारो. सर से मैं सिर्फ कंफर्मेशन लेता हूँ कि जो ये नया टाइम टेबल बनाया है ये कल से इम्प्लीमेंट करना है या मंडे या ट्यूसडे से. ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर ये कल से इम्प्लीमेंट हो रहा है तो सर विल इन्फॉर्म यू. ओके, सो अगेन आई विल रिपीट. टाइम टेबल क्या होगा कल से? 9 to 12, 9 o'clock bio, 10:30 केमिस्ट्री, देन अ 45 मिनट्स ब्रेक. यहाँ जो बैठे सबके लिए एक लंच ब्रेक होगा. 1:45, 12:45 we start with physics till 2:15. अभी सब लेक्चर 1.5 घंटे के होंगे. Then 2:15 to 3:45, that is 3:45, we'll have maths last. समझा? Okay, चलो, थैंक यू. कल मिलते हैं.